to all of you. Well, बहुत अच्छा लग रहा है आप सारे एक साथ में स्टेज पर हैं और आप दोनों को मुझे एक छोटा सा स्टेप करके दिखाना होगा. ये तो हम सब यहाँ बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है वैसे. तो सबसे पहले मैं मिस्टर निकुंज एंड मिस्टर सुनील से एक सवाल पूछना चाहूंगी. I want you to know this is the 4th series. Any pressure? How was it? What was the overall experience? And what are your expectations? Absolutely, there is no pressure at all. Okay, so we are honored and overwhelmed by the film which is being given by the Madam as well as Bhavija Studios, those who are making a foray into the distribution, and it is a very proud moment associating with the Bhavija Studios. Lovely, Mr. Nikunj. Oh, that's really true. Thank you for Sundar sir, Khushbu ma'am, and everybody for giving us this opportunity and this. Oh. Thank you for everyone to give us this opportunity. And yes, we have been distributing films. We have been making films for a longest period of time, like last 30 years. And now it's a successful franchise. We are very amazed to be collaborating with this. आप सबको मेरा नमस्कार. बहुत अच्छा लगता है कि इतने सालों बाद मुंबई में इस स्टेज पर हूँ. And I should say thank you to my husband for making a successful film. In fact, ये जो तो बिल्कुल पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए. I am just the person who signs a check, and that's because I have a blind trust in him. And I think this is our what? How many film in our production? Yeah, this is probably our 20th film in our production house, Avni Cinemax. And fortunately, we have a success rate of 90% when it comes to the filmmaking. And again, the entire credit should go to him, क्योंकि वो जो भी कहते हैं ना कि the dirty job behind the screen, वो सारा काम वो करते हैं. तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, शोज होते हैं, कैमरे के सामने होता है, तब मैं आती हूँ. So better half ने आधा काम कर दिया है. बेटर हाफ में से बेटर हाफ से भी ज्यादा काम वो कर लेते हैं. I was a part of Aranmani 3, so this is my second horror film. Okay. How was your experience? So मुझे हॉरर फिल्में देखना बहुत पसंद है और पहली बार मैंने अरनमनई 3 में देखा था कि हॉरर फिल्म कैसे बनती है. तो बहुत ही इतना मुश्किल नहीं है हॉरर फिल्म में एक्ट करना, लेकिन डायरेक्शन बहुत मुश्किल है. एंड आई थिंक द कैपनोवा शिप Sundar C sir is a master of that craft. He knows exactly what he wants, how he wants it. And जितने भी आप scares देखते हो या जितने भी आप कॉमेडी देखते हो, बहुत सारे लोग कभी कॉमेडी का ओवरबोर्ड कर देते हैं एक हॉरर फिल्म में, लेकिन आप देखेंगे इस फिल्म में स्पेसिफिकली both are a strength. Not one overpowers the other. So I feel it's a perfect horror comedy film. शायद इसीलिए इतने लोग आ रहे हैं देखने के लिए. और इसमें जो हॉरर एलिमेंट भी है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप डर जाओगे या because you're scared of horror films you can't watch it. You can definitely watch it with your families. And बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखने आ रहे हैं. तमिलनाडु में स्पेसिफिकली मैंने सुना है कि the response is amazing. Numbers are already speaking. And मैंने फिल्म देखी है, तो I can also say that it is a collaborative effort. More than me and Tamanna, also there are these wonderful comedians we have जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस पिक्चर में. तो I think it's always a collaborative effort, and I hope that the Aranmani series keeps going on and on. That's why I was telling sir, I said आपने बहुत you want a lot of moolah and a lot of respect, and I feel that it keeps going on and on. Tamanna is also fabulous in the film. I've seen it and she's superb. I think for all the Tamanna fans, they should definitely watch this film for sure. Yeah, and all the horror genre fans should watch this film for sure. Perfect. Congratulations once again to you, and I'm sure you've delivered an exceptional performance in the film, and we all are going to love you. And coming to you, you're gorgeous. And how was your horror experience first to begin with? पहले तो मैं सबको बता दूं कि ये सब जो चेन्नई से आए हैं, मैंने बहुत बोला है कि हमारी मीडिया ना बहुत कूल है और हम बहुत मस्ती करते हैं. हमारे प्रेस मीट्स बहुत फन होते हैं. तो आपको पहले ही बता देती हूँ that you guys have to ask very fun questions. वेट कर रहे हैं क्योंकि 100 करोड़ एक फिल्म का कमाना जो फीमेल लेड है with just a South Indian release, I think it is an achievement for us. It really makes us proud and makes us want to share this film with all of you. मैं आपको सबके बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत रहा है कि अगर मैं आपको इनके बारे में कुछ बताऊँ नहीं तो इट विल बी इनजस्टिस. सुंदर सी सर के साथ मैंने इसके पहले एक फिल्म में काम किया है. मेरे हिसाब से हमारे देश के टॉप 3 डायरेक्टर्स में से है जिनको
फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू इमोशन टू कमर्शियल फिल्म की सेंस है, एंड ये उन्होंने बार बार साउथ में प्रूव किया है, और मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि उनके साथ काम करने का मुझे अपने करियर की अर्ली टाइम में शुरुआत में मुझे मौका मिला। ये फिल्म और उनके बारे में जो मुझे बहुत पसंद है कि हम फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, या हम बोलते हैं वी नीड टू मेक मोर फीमेल लेड फिल्म्स, बट मैंने इनको देखा है कि ये घर पे the kind of upliftment he's had with his girls. He has two wonderful girls. He has Khushbu ma'am. They are the perfect family that anyone aspires to have. And ये उनके सिर्फ फैमिली तक सीमित नहीं है, ये ऐसी स्टोरीज बताते हैं जो वो रिलेशनशिप्स को स्क्रीन पे दर्शाती है, और आप कहीं ना कहीं अपनी स्टोरीज इन स्टोरीज में देख पाते हैं। एंड आई फील लाइक ही इज ट्रूली, ये प्रतीक है एक्चुअली हाउ टू एम्पावर वुमेन, उसका एक्चुअल प्रतीक है, क्योंकि ये सिर्फ घर पे ऐसे नहीं है, लेकिन ये बाहर भी उसे बहुत ही प्राउडली एग्जिबिट करते हैं और अपनी फिल्मों में दर्शाते हैं। ये क्लियरली अरनमने का 4th पार्ट है, और 4th पार्ट होने के नाते ये फिल्म ऑफ कोर्स पहले भी बहुत चली है, ये फ्रेंचाइज बहुत चली है, इसीलिए चौथा पार्ट बना पाए हैं ये। सो आई रियली फील वेरी प्राउड कि मैं एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ काम कर रही हूँ जिन्होंने हमारा काम इतना आसान कर दिया, क्योंकि इन्होंने मुझे जो कैरेक्टर दिया है मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा था मैं प्ले कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर में अभी भी बच्ची हूँ। I think I still no maternal instincts have kicked in, so I am treated like the baby in the house. And जब उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई और बताया कि you're playing a mother who's a protector and who is एक औरत का हर रूप दर्शाने का मौका दिया है इन्होंने इस फिल्म में, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि मेरे पास आई फेल्ट इट्स टू प्योर एन इमोशन, मैं इसे कहीं और से नहीं ले सकती, तो आई हैड टू टेक दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम माई ओन मदर। एंड सेल्वी, तमिल वर्जन में तो सेल्वी है, वो मुझे करने मिला। एंड खुशबू मैम, शी इज द विंड बीनीथ सुंदर सी सर्स विंग्स. She's such a rock solid lady, and I feel so good that I'm working with all these very rock solid people. For me, Rashi is one person who I actually find a lot of love and warmth whenever I meet her, and we worked together before in a Telugu film. लेकिन I don't know, somehow एक प्रोफेशनल जैसा रिश्ता ही नहीं है. मैं बहुत पसंद करती हूँ राशि को, क्योंकि वो बहुत ही एक सिक्योर एक्ट्रेस हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं. इस तरह का ठहराव शायद हमारे देश में कुछ एक्ट्रेसेस दे पाती हैं. मैंने देखा है फिल्मों में, स्पेशली जब कमर्शियल फिल्म्स होती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ हम एटलीस्ट साउथ इंडियन फिल्म में आई हैव नोटिस्ड बीइंग प्लेइंग बबली कैरेक्टर्स, बट आई हैव सीन राशि ऑलवेज ब्रिंग सो मच subtlety, so much softness, so much realism to her characters. I'm a big fan of Rashi, but I'm a bigger fan of how amazing a person she is and how beautifully she, she's outside. So yeah, I'm so happy, Rashi, we could do this together. It's a very special film for the both of us. And yeah, this entire journey for me has been extremely, extremely rewarding because अगर ये फिल्म आज साउथ में इसने अगर 100 करोड़ किया है, इट्स अ ह्यूज वैलिडेशन फॉर एक्टर्स, फीमेल एक्टर्स, कि अगली बार होपफुली फिल्म मेकर्स फीमेल लेड फिल्म्स पे ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे, अलग किस्म के स्टोरीज लेके आएंगे, अलग किस्म के किरदार लेके आएंगे. सो इट्स वेरी वेरी वैलिडेटिंग और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये फिल्म को प्यार मिल रहा है. और अब ये प्यार हम आपसे भी चाहते हैं, इसीलिए हम इस फिल्म को हिंदी में रिलीज कर रहे हैं, ताकि जो पूरा देश है इस फिल्म को सेलिब्रेट कर सके जैसे साउथ इंडिया ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा है. और मैं लोखंडवाला की रहने वाली हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आके अपनी तमिल फिल्म सबके साथ शेयर कर रही हूँ जो हिंदी में रिलीज होने वाली है. अरनमने 4 is in theaters from the 31st of which month are we in? Yes, that's how much I remember which month we are in. 31st of May. Guys, please watch this film. It's super emotional. It is a horror comedy, and I think horror comedy that is filled with entertainment. तो जितना उन्होंने हिंदी में बोला है वो सब एक सिक्सर बाउंसर की तरह गया होगा IPL में, लेकिन otherwise he is fine. मतलब in 30 years of a married life or together what we have been in 30 years,
there was a an understanding कि मैं उन्हें हिंदी सिखाऊंगी, वो मुझे तमिल सिखाएंगे. उन्होंने मुझे तमिल प्रॉपर्ली सिखा दी, लेकिन मैंने उनको हिंदी नहीं सिखाई. कोशिश की, लेकिन it was terrible. So then I gave up. So he is fine. He can still understand a bit, but most of it what you spoke, I'm sure it is gone. No. उनको मेरा जो भाव है उनको वो महसूस इमोशन समझ गए, वो समझ गए, बिकॉज इतना प्यार था उसमें. Good afternoon, everybody. Normally, I'm very nervous when I'm on stage or holding a mic, and I'm more nervous now because this is the first time I'm being in front of Mumbai media, press, everybody. And excuse me if I make any mistakes in my language. Very, very nice to see you in my Alumni 4 function, because Alumni 1 was a big hit in South and it was dubbed in Hindi as Raj Magal, as you know. That movie did so well in OTT and satellite channels. After that, all the South Indian movies which are RR or comedy, they are dubbed in Hindi as RR, Raj Magal 2, 3, 4. Now the line is going on. So I have to wait for a Raj Magal franchise number to get. At last, I'm getting my own title for the Hindi dubbed version. So happy. Actually, I was discussing with Tamanna. The main reason for the Alumni 4 success, one of the main reasons for the Alumni 4 success was when I was doing that movie. The movie was really, when the movie was ready for the release. Normally in the South, they'll have the pressure only after the release because they are scared whether the movie will carry good report or not. So always they will have the press meet after the release of the movie. And I had only one marketing strategy for my movie, that's Alumni 4. I had the press show before the release of the movie. And the only one condition I put forward for my press and media friends down south was they have to come with the family to the theatre for the press show. Because I arranged a big theatre with more than 1,200 capacity, and all the press and media friends come to the theatre with the total family. So when they saw the family laughing and enjoying the movie, automatically I got a very good reviews for the movie. And even before the release of the movie, my movie was declared a super hit success. So that's the power of media and press. So I hope you'll also support the movie tomorrow and help it in making it a big success. And to talk about Alumni 4, all the 3 movies before I did in the Alumni franchise were all super duper hits actually in the South. Even though the movies are super hit, I didn't do it the next franchise immediately. For the fourth franchise, I took nearly 12 years to make it the 4th movie. Because I don't want to capitalize on the success or to make the money. Okay, immediately we'll take the Alumni, one more Alumni, we'll earn money like that. I never went like for that. I always waited for a nice script, nice idea to come. So then only I'll touch the Alumni franchise because And सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भूतों में विश्वास है कि नहीं. हम सबसे पूछते हैं कि आप भूत में विश्वास करते हो, ऐसी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करोगे. अगर आप खुद ही भूतों में विश्वास नहीं करते तो ऑडियंस क्यों आएगी भूत देखने के लिए. लेकिन 3 घंटे जब अरनमनई 4 स्क्रीन पे चल रही थी तो मुझे सच में ऐसा लगा कि भूत होते हैं और शायद बाघ होता होगा असम से, जिसको आप साउथ में ले आए और अब हम मुंबई में लेकर आ रहे हैं. अगर 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड तेलुगु में, तमिल तेलुगु बोथ ओनली, ओके, सो ओनली तमिल में एंड वर्ल्ड वाइड एक असमी भूत धूम मचा सकता है, तो आई एम श्योर कि हिंदी ऑल्सो विल एक्सेप्ट द फिल्म विद ओपन आर्म्स. Karmic Films is very, very proud, very, very humble to be associated with all you beautiful stars. Paveja Studios, this is our first venture together, and we have superstars on board. I'm very, very, very grateful and blessed. Thank you so much. Artist performance. So say some good things about Tamanna's performance. Actually, the thing is, when I finished the script of the movie, I want a artist. That's the core of the movie. Actually, she should be very powerful in her performance. At the same time, audience should relate to her, and she should have a star value also. So we have to put together everything. The glamour should be there. That everybody knows that Tamanna is glamorous, everything. But performance oriented, I want to bring the other side of Tamanna because I know already we have worked in a movie. I know how talented she was. The movie before that we worked on some movie called Action. The title itself was Action, and we did some miraculous, great action sequence in Turkey, Azerbaijan, everywhere, and she did a fabulous job.
Now I want to bring out that emotional and performance side of Tamanna. I think you will, once you watch the movie, you will understand. You can see it by yourself how talented she is. Because the other side of Tamanna, which before that I think nobody have seen in a lot of movies. It came out in Armani 4, and such a fantastic actor, such a dedicated. Because a heroine to nearly survive for nearly 18 years, it's not an easy job. Only the dedication, professionalism, everything will make her what she is now. Made her what she is now. And Armani 4, I am very happy because in the South, nobody expected Tamara to perform so well, to be frank. And it was a sweet surprise for everybody. And whoever comes out of theatre after watching the movie, the first thing is they talk about is Tamanna's performance. So thanks Tamanna for getting great, and I tortured her so much. It was, even though she's doing some emotional scenes, it was totally in the rope, lot of action sequences. She's carrying 2 kids in the rope, have to fly, dive, lot of things. Even after the death in the movie, she was having the ropes scenes, everything. So difficult to perform with that difficult sequence. Tamanna came out with flying colors, and thanks her for making my praise to Tamanna to come out. Yeah. Thank you so much. मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। सुनील दत्त साहब के साथ आपकी फिल्म देखे थे हमने, आप बहुत मासूम चेहरा था उस टाइम भी, और आज भी आप वैसी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहिए फिल्म के बारे में। जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा लगता है, मेरी शुरुआत यहीं से हुई है, पैदाइश परवरिश पूरी मुंबई से हुई है, सो मुंबईची मुलगी मी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काम था तो चेन्नई गई, वहाँ पे बस मिल गए, वहीं पर अटक गई। तो एंड बस कहते हैं ना कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि वो एक भगवान की कृपा होती है, उनकी देन होती है। तो मैं ट्रूली समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बेटर हाफ सुंदर सर जो हैं वो एक भगवान की देन है, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। क्योंकि कहते हैं कि कहा जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट आई ट्रूली बिलीव बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन हु हैज अ बिगर हार्ट, एंड दैट इज डेफिनेटली माय हस्बैंड। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज तक मैंने नहीं देखा ज़िंदगी में उन्होंने मुझसे कहा होगा कोई चीज़ ना करें। कहते हैं उनकी ओपिनियन होते हैं, लेकिन कहते हैं कि डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। एंड जहाँ तक फिल्म का सवाल है, हर वक्त जब मैं बॉम्बे आती हूँ कोई ना कोई पूछता है कि आप हिंदी में क्यों नहीं काम करती हैं, आप इतने साल हिंदी में से क्यों दूर रही हैं। वहाँ पर काम था, फिर शादी, फिर इमीडिएट 2 बच्चे, और मैं बहुत ही हैंड्स ऑन मदर रही हूँ। तो 2 बेटियों को बड़ा करते करते काफ़ी वक्त लगा। बड़ी बेटी ये सितंबर में 24 साल की हो जाएगी, और छोटी वाली 21 साल की है। तो बस फैमिली लाइफ में रही, अभी वक्त है, तो अभी शुरुआत होने वाली है, तो देखते हैं। बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर एज अ प्रोड्यूसर आप सबके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ, तो उसमें बहुत ही एक फख्र महसूस होता है। अच्छा लगता है कि यहाँ से दूर रही, लेकिन फिर भी एक कुछ अचीव करके, ज़िंदगी में कुछ हासिल करके, एक मुकाम पर पहुँचकर आप सबके सामने आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। About women, there's 1 woman helming it, 2 women headlining it, earning 100 crores, which is a great feat in itself. What do you have to say about this? What does this 2 achievements mean for women in cinema in terms of money, in terms of everything? It means that women have arrived. It's high time people stop looking at women. I definitely do not appreciate when they say every time a woman achieves, oh, she is shattering the glass ceiling. I said, why these terms are used only for women? It's because they do not expect women to do well. There's a basic mindset where they feel that women cannot do, there's something which holds them back. But I say you give them a platform to achieve, give them those wings to fly high, and women can do wonders. So what we have seen at Cannes and what we see with Aranmanai 4, with of course Tamanna and Rashi, and we have a very brilliant actor called Kove Sarla. She's a character actor who has done a very major role in the film. I think these 3 women have really taken it forward, and I think all I say is stop looking at women with a very pre-assumed mindset that women cannot achieve. Just let them loose, give them that free hand. Like you never ask a man, he has achieved something, he's broken the glass ceiling. Nahi.
So why those kind of phrases is only for women? Appreciate women. The equality has to start in your minds the minute you understand that women are absolutely equal to men, not physically, but when it come to terms with their professionalism or their talents. I think women are definitely a step ahead of men when it comes to talents. So just let them fly. Just let them go free and stop judging them. You know, even before you know them, most of the people around, they come with this judgment, a very opinionated and lot of judgments about a woman. So I think we need to stop being opinionated about them. We need to stop having our judgments about them and just let them be as they are. And you will see women will be flying high. Us as female actors, that we can hold a film on our shoulders and still deliver. For that, we also need filmmakers who believe in us, filmmakers like Sundar C sir and everybody who puts an effort to put such a film on a female's shoulder. And I think art and cinema should be beyond gender. It's high time we treat it like that. And I think films like Article 370 or Crew or even now our film have only proven that women are as far ahead as men are, and I think even this conversation shouldn't exist in time where everybody should be treated equally and everybody and art should be judged by the way it's made and not by who's in it, I feel, and that should go beyond gender. That's what I feel. And I also feel that that should also I mean, we should get better paychecks in films, honestly, because there is a huge gap, and I hope that happens in time. It's a process, but I'm very, very proud of what has happened in Cannes as well. Seeing those women, you know, it's an amazing feeling because, you know, anybody who lights the way paves that path for all of us. And I'm very, very proud of the film, and I'm proud of what women are achieving. Indian women also, like, worldwide. So I think it's a very proud moment for us to bring this film to you and tell you that, okay, this is what we have earned and this is what we are bringing to the Hindi audiences, and I hope that you guys watch it and the numbers go even higher up because that really validates our existence in the industry is what I feel. अब डिपेंड करता है आप कौन से सिटी से हैं. अगर आप दिल्ली से हैं तो फिर भक ही आएगा. लेकिन अगर आप साउथ से हैं तो आपको बाको बोलना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली ये आसामीज शब्द है. So yeah, it really depends from where you are. And Rashi, I've been dying to ask this to you for the last few years. Scared. सच बताना, रसोड़े में कौन था? रसोड़े में दूसरी राशि थी, मैं नहीं थी. And Sundar sir, I've been reading about that. I've not seen any of the film, but I've read all about them. And you're playing advocate. I think this is the second film where you're playing the advocate. So I wonder, like usually in a horror film, you'll find a hero playing a doctor, a cop, a psychiatrist. When he plays a lawyer, I mean, there's no option of even throwing the law books at the ghost. No, just as a character, it doesn't influence anywhere in the script. Just as a character, I have to do some job. So it's a lawyer. So nothing particular reason to play a lawyer or a doctor in this movie. And Rachi, you briefly mentioned about the horror films, how you like it, and I want to know from both Rashi and Tamanna, like growing up in Bombay and Delhi respectively, what were the kind of horror films, if you can just talk about that experience growing up in these cities and the kind of horror that you look forward to in your younger days? I think बचपन में तो कोई horror film में देखना चाहता नहीं है when you're growing up, but I think I started loving horror films when I was growing up as a teenager. तो मुझे उर्मिला जी की एक फिल्म थी भूत ना उनका, yeah, that was one of my favorite Hindi horror films. And usually हम horror films देखते हैं तो English फिल्में ही दिमाग में आती हैं, जैसे Conjuring है. Expect a political question in a filmy theatre, but I am part of BJP, so like everyone else, I'm waiting for the results on June 4th, which we are very sure that ab ki baar 400 par, phir ek baar Modi Sarkar. So no two ways about it. We're absolutely excited about that. Apart from my party leader, apart from the highest regards what I have for a Prime Minister, if you ask me who has been my favorite politician, I would always say it was Dr. Kalingar, because I started with my political life with Dr. Kalingar's party when he was the chief minister, and I think I always say, and I always consider him to be my teacher when it comes to the political nuances. I've learned a lot from him, so I have greatest regards, and I always hold him in high esteem.
So it has to be, apart from my leader, it has to be Dr. Karim. See, thanks Rudrani, thanks for the question. Of course. So I actually think of it like, at the end, it is every actor's journey as to what they want to do in cinema, and it is literally an actor's choice. I feel it's unfair to always put everything onto an industry or a gender, because these things are generalizations, but I don't think it works like this. Our industry, although it's a small close-knit one, every actor has his or her freedom to choose what they want to do, what kind of work they want to do. If somebody with their goodwill wants to do something like this, it's really up to them. So I actually don't hold anything against anybody, because everyone has a different work journey. Yes, I have done many films in which I thought I wanted to be a part of the film, so I did it. But that was me as an actor making that individual choice. Yes, it's lovely if we could get, support. But like Sir said, in today's time and age, I don't think it matters. Like I'm saying it, even for my character, had another girl done this film, I think she would have benefited from this film. This merit would have gone to her. So I feel like what matters today is the content actually being that good, that it pulls people into theaters regardless of who's in it. And I think that's the only way to go forward. I think that's why also we are making waves as a country internationally also. That's because the work is good. So yeah, that's what I feel about it. Money is proving that and paving that way forward for all of these individual films where women are the lead, and I think it's high time we start making those films because they are also commercially viable today. So I think we are in a very good time, and a lot of actors, their thinking also I see changing, because now it's not more about अरे मेरा कितना रोल है इस पिक्चर में, मैं हूँ कि नहीं हूँ. It's more about, okay, even if it's a small part, how well can I do it? How will this film have a reach because of the content that it has? Do I have a good character? And so that thought processes have changed, and nobody today knows what will work and what will not work. So I think it's the best time to experiment and see what works for you as an actor. And I also feel, I also hope that even male actors start thinking like that. A lot of them that I know have started thinking like that already, because nobody knows, there's no formula anymore. So I feel it's a great time to be actors in the industry, and things are changing. It will still take time, but I hope they change soon. Yeah. राशि मतलब ऑडियंस कैसी है? अगर भूतों के लिए मेकर्स ने स्पेशल स्क्रीनिंग रखा तो आप दोनों को साथ में बैठ के देखना हो, तो आपकी फीलिंग क्या होगी, रिएक्शन क्या होंगे? पहले तो मैं बड़ी एक्साइटेड होंगी कि भूत है तो मुझे देखने के भूत होते हैं कि नहीं होते हैं. आई थिंक आई विल बी मोर एक्साइटेड in trying to figure out if Ghost exists rather than putting my attention there. I know तमन्ना की आंखें बंद होंगी और वो कहेगी तू देख ले because उसको बहुत डर लगता है. But I think I will take it head on because this is one topic that has always interested me, because if there's God, there's also devil. So I do believe that ghosts exist, और ऐसा अगर situation होती है तो I think it's very exciting for me. But I know how scared तमन्ना होती है. Yeah. देखिए मुझे अंधेरे से भी डर नहीं लगता, इसलिए हम टीवी चालू रखते हैं. बहुत ही अच्छा आइडिया है एक्चुअली. हम रखते थे भूतों के लिए स्क्रीनिंग. वैसे भी भूत सर कटे होता है तो उनका सर नहीं होता, तो वो भी आके ये फिल्म अपना दिमाग कहीं छोड़ के ये फिल्म देख सकते हैं. Would be great. Would be like so many films, right? Maybe they'll give us better ideas to make horror films. Possibly. Maybe we'll take an advice. रिएक्शन पूछ रहा हूँ, आपकी रिएक्शन क्या होंगे, आपकी फीलिंग क्या होगी उस टाइम अगर साथ में बैठ के देखना आपको? बहुत खुश होंगे हम, बहुत ज्यादा खुश होंगे कि भूतों ने, जो किसी भी फिल्म स्क्रीनिंग को ग्रेस नहीं करते, हमारी फिल्म के लिए आए हैं. You'd feel important. This is भूतों से कम और इंसानों से ज्यादा डरना चाहिए. सब पूछ रहे हैं ना, और very light and low. मुझे भूतों से डर था क्योंकि मैं उनको समझती नहीं हूँ, बट डेफिनेटली मैं डरती ज्यादा इंसानों से हूँ. बट आप जो पूछ रहे थे कि भूतों से पला है, हाँ कभी ऐसे होता है ना, एक्सपीरियंस होता है कि कोई जगह हॉन्टेड है. अच्छा हुआ आपने सवाल उनसे पूछा नहीं, मेरे हस्बैंड से नहीं पूछा, तो कहते कि पिछले 30 साल से एक से पाला पड़ा हुआ है. They wanted to know if you have ever experienced anything in ghosts. 30 years. नहीं, बट कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होता है ना, बहुत बार ऐसी जगह होती है जहाँ हमने काफी होता है. इनफैक्ट अगर आप पूछें तो, अगर आप गूगल भी करें तो द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जो सुनी जाती है अपार्ट फ्रॉम स्कॉटलैंड, आई थिंक ऊटी माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया. तो हम हर शूटिंग हमारी ऊटी में होती थी, और कहीं ना कोई एक्सपीरियंस होता था हमें. तो मतलब ऐसा है कि कहीं दरवाजे के बाहर कोई आवाज आ रही है या घर के अंदर सडनली लाइट फ्लिकर हो रही है, तो हम लोग लाइक
यार सोने देना तू भी सो जा. So that is how we used to, हमें आदत हो जाती है. If you Google there, you'll find the most haunted place in India. There is one studio, famous studio. I think it shows second position in that most haunted place. And most of the industry people have experienced that thing. Some experience of that. Most of the South stars, you can ask for their experience. Most of them will have. Some will accept, some won't accept. But most of the top stars won't stay in the particular hotel which is there in the studio. कभी मुकेश मिल में कभी एक्सपीरियंस किए? Lots of you heard about it. हंसी को रोकती थी बिकॉज दे आर सो गुड एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ दोस कॉमिक सीन्स. तो मैंने बहुत एंजॉय किया उनके साथ काम करना. ऐसा पर्टिकुलर फनी सीन नहीं है बट आई थिंक द फिल्म ऑन द होल द वे दे हैव रिटन द कॉमेडी इज लेस्ड वेरी वेल. तो मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके. बट आई थिंक बहुत सारे एक्चुअली रोप शॉट्स थे. तमन्ना के लिए बहुत ज़्यादा थे, मेरे लिए कुछ थे. तो वो भी मैंने एक्चुअली एंजॉय किया टू सी ये उड़ते कैसे हैं, यू नो, बिकॉज पहले कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया. तो वो भी दैट वाज आल्सो फन फॉर मी ऑनेस्टली. हाय नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर. नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर. मेरा सवाल आपसे है तमन्ना कि आई रियली थिंक इस फिल्म के लिए फिजिकल प्रेप से ज़्यादा मेरे लिए इमोशनल प्रेप ज़रूरी था. बिकॉज इसके पहले मैंने कभी एक माँ का किरदार नहीं निभाया. इट वॉज वेरी वेरी न्यू फॉर मी. लेकिन बहुत ही प्योर इमोशन है इस फिल्म में. सो फॉर मी कहीं से कूद रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, आई थिंक नन ऑफ दैट रियली मैटर्ड टू मी. बिकॉज जो वजह थी वो हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी थी. सो बट आई रियली एन्जॉयड बिकॉज ये इस किस्म का डायनामिक शायद एक फिल्म में प्ले करने का मौका नहीं मिलता. where there is so much physicality in the acting but it's also very very emotional. तो ये जो blend था बहुत ही interesting था मेरे लिए as an actor to explore. As an actor, you want to be able to do all kinds of films, and obviously some will be places where you're not, where it's not very well written. So you do whatever that you get, you make the best out of it, and you try to create a character. Some where you know the whole onus of the film lies on your shoulder, which is great. That's also a film that we would like to do. We also like to do our singing and dancing because I really enjoy that in films. I enjoy commercial films. I enjoy content films. So ऐसा. I mean, obviously, when we are doing a film, we want to see if the script. Sometimes the script is great, sometimes the director is great, sometimes the co-star is great. So, I think the decision matters on the whole कि हमें क्या मिल रहा है उस फिल्म से, you know, और हम हर तरह के किरदार करना चाहते हैं. तो I think a film even like Aranmane, because I was a part of Aranmane 3 and I know the way it was made. And I didn't even listen to the script, honestly. I don't think a lot of people know this, but मैंने script सुनी नहीं थी, story सुनी नहीं थी. मुझे सिर्फ सुंदर सर ने कॉल किया और बोला मैं अरनमने 4 बना रहा हूँ, I want you in the film. And I said, sir, I'd love to be a part of it. और मैंने script सुनी थी, बैठ के उनके साथ जब मैं शॉट दे रही थी, सर मुझे बताना जरा हो क्या रहा है. And then he said, okay, this is your character, this is what is happening. And it came from this internal belief that I had in him about the film that he will make. As I said, he is the master of that genre and he has proven that with the series. तो कभी कभी आपको वो ट्रस्ट फैक्टर होता है एक फिल्म मेकर में, और ऐसे ही आपकी जर्नी आगे चलती है. अगर आप एक ही तरह की फिल्में करते रहेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और ऑडियंस भी आपसे बोर हो जाएगी. तो आई थिंक फॉर बोथ ऑफ अस इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू नो आवर किटी इज फुल ऑफ थिंग्स व्हिच आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अरे क्या बोल रहे हैं, आपने नहीं देखा ट्रेलर ठीक से? नहीं, ट्रेलर में क्लाइमैक्स सॉन्ग में हूँ मैं, वो कैमियो है मेरा. अच्छा, ओके. सिर्फ क्लाइमैक्स सॉन्ग में माई सेल्फ एंड सिमरन वी हैव डन अ सॉन्ग. बट वो तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, तो आज आप कर लो. बट अपार्ट जोक्स अपार्ट, आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मेरा नाम वहाँ रहे. एज अ प्रोड्यूसर खुशबू सुंदर प्रेजेंस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एज एन एक्टर, क्योंकि हर वक्त एक फेज़ होता है कि आप आगे बढ़ते रहते हैं. तो लगभग 200 फिल्में कर ली, सब नाच गाना सब हो गया, कैमरे के सामने सब हो गया. कैमरे के पीछे आप किस तरह से अपने आप को संभाल रहे हो बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो आई थिंक यस, आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ अरनमने एज अ प्रोड्यूसर एंड ऑफ कोर्स टू बी प्राउड always as an actor to be in front of the camera. Thank you. Brothers and sisters, for giving us a pleasant experience. I came here little scared. It was so smooth and so entertaining. Thank you for all, and especially after that I want to thank Mr. Sajid and Lalwani and Bhavija Studios also for taking our movie to the Indian audience, and thank you.